Hello, students of class 5, and welcome to my channel. Today we shall do your chapter 1. Let's revise. Now, arrange these words in alphabetical order. Number 1, yachting, skiing, archery, discus throw, polo, and badminton. Now, when you are asked to arrange words in alphabetical order, means you will first see in what order the words are starting with the starting alphabet of each word you will see. Like in yachting, it is starting with Y. In skiing, it is starting with S. In archery, it is starting with A. So A will come first. So in this first blank, you write archery. Next comes B, badminton. So after that comes badminton. After that will come D. So discuss throw. After that, you have to see what is the alphabet which comes next. That is polo, then comes skiing, and then comes yachting. A, B, then comes D, then T, then P, S, and Y. So you have to see which alphabet the words are starting with. मतलब कौन से अल्फाबेट से ईच वर्ड स्टार्ट हो रहा है पहले वो देखिए उसके बाद उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए नेक्स्ट नंबर 2 ये तो हुआ नंबर 1 में हुआ कि आपको सारे अल्फाबेट्स अलग अलग थे हर वर्ड में अब नंबर 2 में हम देखेंगे म्यांमार भूटान नेपाल बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना यहाँ पे दो वर्ड्स देयर आर टू वर्ड्स बांग्लादेश एंड भूटान which both are starting with B now so after that next what we will see is what is the second alphabet B A and B H अब B A पहले आता है A पहले आता है H से alphabetical order में तो पहले हम लिखेंगे बांग्लादेश then we will write Bhutan after that what is the next word which is starting in according to the alphabetical order C China China Myanmar Nepal Pakistan B B C M N P ये सब alphabetical orders में आप word का पहला देखेंगे पहला अल्फाबेट देखेंगे हर वर्ड का उसके बाद अगर दो वर्ड्स में you are having the same alphabet then what you will do you will see the second alphabet of each word and then compare which comes after what in the alphabetical order number 3 introvert stubborn diligent indecisive confident and aggressive now, first comes aggressive, A, then comes confident, then comes diligent, then comes indecisive. अब यहाँ पे देखिए आई एन यहाँ पर भी है और आई एन यहाँ पर भी है बट आई एन डी पहले आता है उसके बाद आई एन टी आता है therefore first you will write indecisive and then you will write introvert अब देखिए अगर आई एन डी होता यहाँ पर और यहाँ पर भी आई एन डी होता then you will come over to the fourth alphabet and compare ऐसे ही आप देखेंगे नेक्स्ट 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 करके आप देखेंगे वर्ड में कौन सा नेक्स्ट अल्फाबेट अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार है उसके बाद आता है आपका स्टबर्न नेक्स्ट 4 सेलेरी कैरेट्स कैबेज जिंजर garlic and string beans यहाँ पे we have three words which are starting with C but again, we have to compare the second alphabets. Here it is CE, here it is CA, again over here it is CA. So we will leave out celery for the time being and we will compare carrots and cabbage. Up CA same हो गया. So we will compare the third alphabets in both these words and we will find that CAB comes before CAR. So पहले हम क्या लिखेंगे? Cabbage लिखेंगे, then carrots लिखेंगे, फिर celery लिखेंगे उसके बाद तीन सीज हो गए सी के बाद नेक्स्ट क्या आता है जी तो जी जिंजर और जी गार्लिक में कौन पहला आएगा जी जी सेम है तो सेकेंड अल्फाबेट्स को कंपेयर कीजिए ए एंड आई सो जी ए पहले आएगा तो गार्लिक उसके बाद लिखेंगे फिर जिंजर लिखेंगे और उसके बाद आता है एस स्ट्रिंग बीन्स तो स्ट्रिंग बीन्स लास्ट में लिखेंगे नंबर 5 प्रोटेक्ट pollute preserve pollution protection preservation अब यहाँ पे you can see that all these words are starting with P. So first you will see, because all these are starting with P, compare the second alphabets of all the words. First, we will know that O comes before R. In all these pollute, pollution, we have PO.
and the remaining all have PR. So because O comes before R, पहले pollute, फिर pollution, फिर हम बाकी चार को कंपेयर करेंगे. फिर आएगा आपका preservation. PR हो गया. यहाँ पर PR, यहाँ पर PR, यहाँ पर PR और यहाँ पर PR. तो हम कंपेयर करेंगे थर्ड अल्फाबेट. थर्ड अल्फाबेट यहाँ पे PRO, PRE, PRE और PRO. सो उसके बाद हम कंपेयर करेंगे फोर्थ अल्फाबेट. पहले हम लिख देंगे प्रिजर्वेशन एंड प्रिजर्व, उसके बाद प्रोटेक्ट एंड प्रोटेक्शन अकॉर्डिंग टू द order in which the alphabets are coming one after the other. Next, number 2, identify the kinds of sentences. पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है. A sentence is a group of words that makes complete sense. Now, what you have to understand is sentence क्या होता है. एक अल्फाबेट से बनते हैं वर्ड से बनते हैं सेंटेंसेस, और अगर वो सेंटेंस कुछ मीनिंग कन्वे करता है आपको, तभी वो सेंटेंस कहलाता है. अदरवाइज it is not a meaningful sentence. Now, there are some kinds of sentences as you would have studied in your class 4. First is assertive or declarative sentences. Assertive मतलब आप पूरा मतलब आप कुछ पूरा स्टर्नली बोलेंगे, मतलब इट विल स्टेट समथिंग एंड उसको करना ही करना है, वैसे है. assertive और declarative sentences, they simply state something, they start with a capital letter and end with a full stop. They may be affirmative or negative. अब affirmative का मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है या नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है. नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव का मतलब है to ask questions or to ask. So interrogative sentences, they ask questions and they end with a obviously with a question mark. Next है imperative sentences. Imperative sentences क्या करते हैं students? They make requests, they give orders, they advise or they give suggestions. Now these sentences also will end with a full stop. Next we come to exclamatory sentences. Now, exclamatory sentences will express sudden or strong feelings. They end with an exclamation mark. Now, let us go over to the exercise. Drink plenty of water. अब ये क्या बोल रहा है आपको? Drink plenty of water is an imperative sentence. क्यों? Imperative क्यों? क्योंकि वो आपको कुछ suggestion दे रहा है, इसीलिए वो आपको बता रहा है कि drink lot of water. It is either it is making a request or it is giving you some advice or suggestion. Therefore, it is a, जैसे कि हमने पढ़ा, imperative sentences make request, give orders, advice or suggestions. So, drink plenty of water is your imperative sentence. Next, do you turn the tap off while brushing your teeth? अब इस सेंटेंस में हम पहले देखेंगे कि लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क है, और जहां पर भी क्वेश्चन मार्क आता है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? इट बिकम्स अ इंटरोगेटिव सेंटेंस. सो नंबर 2, इंटरोगेटिव सेंटेंस. नंबर 3, आई यूज अ स्प्रिंकलर rather than a hose to water my plants. So this is a डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये डिक्लेयर कर रहा है या सिंपली स्टेट कर रहा है कि I use a sprinkler rather than a hose. यहाँ पे कोई कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, कोई कुछ रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, या कोई ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है. तो दिस इज a simple declarative sentence declaring that I use a sprinkler rather than a hose to water my plants. Number 4, oh no! Exclamation mark. This tap is leaking. अब यहाँ पे आपने देखा कि एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया नो के बाद. सो ऑब्वियसली दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. जहां पे क्वेश्चन मार्क आता है एंड में, वो इंटरोगेटिव. जहां पर भी सेंटेंस में एक एक्सक्लेमेशन मार्क आता है वो बन जाता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. नंबर 5, वी शुड अवॉइड जंक फूड. नाउ ये आपको कुछ एडवाइस दे रहा है कि हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए. क्या एडवाइस है? कि जंक फूड खाने से हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि फिर सेहत खराब होती है. वी विल फॉल सिक. So this is a imperative statement which is giving you some suggestion or advice. Number 6, don't eat too much fried food. Again, this is giving you some suggestion or advice
then don't eat too much fried food. So this is also a imperative state sentence. Next, answers are all written here, students. You can first understand and then refer to the answers. Next, number 3, circle the subject and underline the predicate. अब पहले हम समझेंगे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है वो क्या है, क्या कहलाते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. नाउ a sentence is divided into a subject and a predicate. हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. अब सब्जेक्ट क्या होता है? The part of the sentence which will tell us who or what the sentence is about. कौन है वो सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या चीज है वो, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं सेंटेंस का. अब वो जो सब्जेक्ट वर्ड है, इट कैन बी अ प्रॉपर नाउन. That means a particular definite name of the place, animal or thing, or a common noun or a pronoun. And imperative sentences में जिसमें हम कुछ एडवाइस या सजेशन देते हैं, सब्जेक्ट हमेशा यू है और वो इट विल नॉट ऑलवेज बी मेंशन, इट इज अंडरस्टूड. तो हमने क्या पढ़ा? सब्जेक्ट सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है which tells us who or what the sentence is about, and the subject word can be a proper noun, a common noun or a pronoun. अब predicate क्या है? Subject जो part of the sentence है उसका बाकी part of the sentence becomes your predicate. The remaining part of the sentence that tells us something about the subject. पहले हम sentence में subject को identify करेंगे, उसके बाद the remaining part of the sentence जो वो subject के बारे में कुछ हमें बताएगा, that is called as your predicate. Now, number 1, let us do your exercise. Circle the subject and underline the predicate. Number 1 is using a carpool is one of the best ways to save environment. अब हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट क्या है. यूजिंग अ कारपूल इज योर सब्जेक्ट. अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो हमें कारपूल के बारे में कुछ बताएगा वो क्या है? यूजिंग अ कारपूल इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सेव एनवायरमेंट. अगर हम कारपूल जो हमारा सब्जेक्ट है यूज करेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सेव एनवायरमेंट इज दैट. सो सब्जेक्ट हमारा हो गया यूजिंग अ कारपूल, प्रेडिकेट हो गया वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सेव एनवायरमेंट. नंबर 2, I would like to have a strawberry shake and a vegetable sandwich. यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा है स्ट्रॉबेरी शेक एंड वेजिटेबल सैंडविच. और इसके बारे में हम क्या बता रहे हैं? The predicate will explain that I would like to have the subject strawberry shake and vegetable sandwich. इसलिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया स्ट्रॉबेरी शेक एंड वेजिटेबल सैंडविच एंड प्रेडिकेट इज I would like to have. Number 3, Ravi and his friend went to the supermarket. अब यहाँ पे what we have to first identify, we have to identify whom we are talking about or what we are talking about. So here we are talking about Ravi and his friend. So Ravi and his friend becomes the subject. Predicate becomes went to the supermarket. उन्होंने क्या किया? सब्जेक्ट ने क्या किया? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताता है उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं. सो went to the supermarket is telling us something about what the subject Ravi and his friend did. So that is your predicate. Number 4, most of the students are afraid of exams. अब यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्टूडेंट्स के बारे में बात. That part of the sentence which identifies your subject is most of the students. And students के बारे में क्या बता रहा है? Predicate हमें subject के बारे में बताता है. So predicate यहाँ पे वो है are afraid of exams. Number 5, managing your time effectively is an important part of studying. अब किसका टाइम है यहाँ पे? कौन है सब्जेक्ट? Managing your time. Your is your subject. So managing your time is that part of the sentence जो आपका सब्जेक्ट है. रिमेनिंग पार्ट जो बोलता है कि अगर आपने अपना टाइम मैनेज किया सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडी. तो सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है प्रेडिकेट. नंबर 6, पेरेंट्स शुड स्टॉप कंपेयरिंग देयर चिल्ड्रन विद अदर स्टूडेंट्स.
यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स के बारे में। और क्या बात कर रहे हैं वो बताएगा आपका प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये बताता है कि शुड स्टॉप कंपेयरिंग द चिल्ड्रन विद अदर स्टूडेंट्स। सो आपको समझ में आ गया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है। नेक्स्ट लेट अस गो ओवर टू नंबर 4। आइडेंटिफाई द टेंस एंड टर्न these sentences into negative and interrogative. The first one is done for you. तो ये करने से पहले we will understand what are negative sentences and what are interrogative sentences. Uh, Please pay attention and understand what is negative sentence. Negative का मतलब क्या है? मतलब कुछ नहीं हो रहा है, कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है। Indicates that some action is not happening, something no longer exists, or that a subject does not possess a particular quality. मतलब उस सब्जेक्ट के पास वो क्वालिटी नहीं है, पॉजिटिव सेंस में नहीं है, वो नेगेटिव सेंस में है। So words like nobody, nothing, no, no one and none specify negative sentences. अब जब हम एक्सरसाइज करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, फिर से इंटरोगेट मीन्स क्वेश्चन पूछना। सो आस्क अ क्वेश्चन टू रिक्वेस्ट सम इंफॉर्मेशन, कुछ जानने के लिए क्वेश्चन पूछता है। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। इट मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं एंड अ वर्ब कि वो सब्जेक्ट करता क्या है। दे कैन बी इन नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म एंड इन एनी टेंस। जबकि नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में रहेगा, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में रह सकता है एंड कोई भी टेंस में रह सकता है, पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, किसी भी टेंस में रह सकता है। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बेसिकली जो आपका है वो तीन बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें। यस और नो क्वेश्चन, आंसर सिंपली यस होगा या नो होगा। दूसरा है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस मतलब यूजुअली begins with question words like who, whom, whose, what, etc. चॉइस क्वेश्चन, द आंसर इज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। मतलब तुम्हें टी चाहिए या कॉफी चाहिए, डू यू वांट टी और कॉफी, मतलब इन दोनों में से ही आपको आंसर देना है। सो ये चॉइस क्वेश्चन हो गए। तो कैसे, कितने टाइप के इंटरोगेटिव क्वेश्चन टाइप से, तीन टाइप के। यस और नो टाइप क्वेश्चन जहाँ पे आंसर सिर्फ यस या नो में हो गया। डू यू वांट टू गो टू द मार्केट, यस आई वांट टू गो टू द मार्केट। डू यू वांट टू गो टू द लाइब्रेरी, नो आई डू नॉट वांट टू गो टू द लाइब्रेरी। ये दो आपके एग्जांपल्स हो गए, यस और नो। Open-ended questions usually begin with question words like who, whom, whose, what, etc. Who were you talking to? Question mark. ये open-ended question है। Choice question, do you like tea or coffee? मतलब आपको टी या कॉफी में से एक ही चुनना है। Next, let us do the exercise. She joins a study group for revision. अब नेगेटिव मतलब क्या होगा? अब ये she joins a study group for revision मतलब वो एक स्टडी ग्रुप के ज्वाइन की है रिवीजन करने के लिए। नेगेटिव मतलब she doesn't join a study group for revision. इंटरोगेटिव क्या है? Does she join a study group for revision? ये हम पूछ रहे हैं। We are asking, does she join a study group for revision? So we also have to identify the what kind of tense this is. She joins. अब join जो है एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है join का, जो कि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब she joins a study group for revision मतलब ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है मेरे और आपके बीच में एक थर्ड पर्सन she के बारे में। You and I are having a conversation about a third person. वो थर्ड पर्सन she है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाता है। सो ये जो joins है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मैं आप आई एम टॉकिंग टू यू नाउ ओनली इन द प्रेजेंट टेंस ओनली, सो इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसके बारे में बात कर रही हूँ? एक थर्ड पर्सन शी के बारे में। शी है तो सिंगुलर, सो इट इज joins is your simple present tense. Next, number 3, he managed his time effectively. अब इसका नेगेटिव आप सोचिए, नेगेटिव इज he did not manage his time effectively. Interrogative, how did he manage his how did he manage his time? यहाँ पे effectively नहीं होगा स्टूडेंट्स, how did he manage his time question mark होगा, there is a small mistake, please remove effectively over here and put question mark after time. How did he manage his time? उसका आंसर होगा he managed his time effectively.
सो यहाँ पे वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द टेंस मैनेज्ड। जहां पे आपका ईडी लग गया वहां पे आपका हो गया पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट टेंस। सो पास्ट पार्टिसिपल टेंस ऑफ मैनेज इज मैनेज्ड। तो यहाँ पे मैनेज्ड आपका पास्ट पार्टिसिपल टेंस है। नंबर 4, भावना इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। नेगेटिव क्या है, इसका नेगेटिव क्या होगा? भावना इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। इंटरोगेटिव, is Bhavna preparing for exams? Question mark. Now, pay attention students. जहां पे आपको verb में ing आएगा, that means वो continuous tense कहलाता है. Wherever you have ing, it is continuous tense. Wherever you have ed, it is past या past participle tense. So preparing, भावना is preparing मतलब अभी present tense में वो prepare कर रही है और ये ing लग गया तो ये present continuous tense हो जाता है। Are you clear, students? Bhavna is preparing for exams. ing, therefore continuous, is, therefore it is present. So present continuous tense. Number 5. Manu will borrow Ruskin Bond's book from the library. Manu, negative, will not borrow Ruskin Bond's book from the library. Interrogative, which book will Manu borrow from the library? Manu will borrow, मतलब अभी तक उसने borrow किया नहीं। will borrow, so it becomes simple future tense. So future में borrow करेगा, so it becomes your simple future tense. Next, students, we will do your number 6. They were watching a reality show. Negative, they were not watching a reality show. Interrogative, what show were they watching? And were watching, ing आ गया तो आपका continuous, and were है, they were watching मतलब past में, तो past continuous tense. Now, number 5. Sort out these words and put them in the correct place. आपको इस बॉक्स के अंदर कुछ words दिए हैं and you have to place them in these leaves. Adjective के कॉलम में, verb में, interjection में, conjunction में, pronoun में, noun में, preposition में और adverb में. So these are all your 8 parts of speech as you have studied in your class 4. अब हम थोड़ा सा रिविजन करेंगे इनके बारे में. Now, what are adjectives? Adjectives are your describing words. इसको describe करते हैं, noun describe करते हैं. Next, what is verb? Verb denotes an action or condition of a thing. आपका जो subject है वो करता क्या है वो आपको verb बताएगा. Next, interjections. Interjections are word or phrase used in a short exclamation. जैसे hello exclamation mark, ouch exclamation mark, oh exclamation mark, hooray exclamation mark. ऐसे ये सब आपके examples है. Conjunction. Conjunction मतलब connect करना. ये word आप connect से आता है. Conjunction. Words used to connect words, phrases and clauses. It is your conjunction. Now, pronoun. It is used in place of nouns to refer to something already mentioned earlier. What is a noun? It refers to anything, person, place, or an animal. What is a preposition? Preposition. Pre, पहले, position. कहाँ पे हम उस word को position करते हैं depends on the noun or the pronoun. So, words which are used before a noun or a pronoun to show the position is called as a preposition. Preposition, preposition. वहां पे हम उसका पोजिशन रखेंगे जैसे अंडर द टेबल, ऑन द टेबल, बिहाइंड द ट्री, अप द ट्री, ये सब आपको prepositions बताते हैं. So I have put the adjectives. I have given you the answers over here, students. Please first understand and then refer to the answers. Adverb क्या है? Word that modifies or describes a verb and adjective, another adverb or even a whole sentence. Up. We will go on to number 6. Cross the odd one out. अब यहाँ में इनमें से we have to see which is not, uh, you know, uh, which is odd, which is not in sequence with the other three. So first one is I, me, mine, mine. Up. Just to refresh your memory, we have studied about subject pronoun, object pronoun,
and possessive pronouns and possessive adjectives. Now, in this I, me, mine and my में I है आपका subject pronoun, me है आपका object pronoun, mine is your possessive pronoun, but my is your possessive adjective. Now, this because all these three I, me, my, mine are pronouns, therefore my being the adjective is the odd one of them. Now, number two, they, their, theirs and them. They subject pronoun, them object pronoun, theirs possessive pronoun. लेकिन their जो है is your possessive adjective. So there is your odd one out there. Number three, we, ours, are and us. Now यहाँ पर odd one out is are. Why? Because we subject pronoun, us object pronoun, are possessive adjective हो जाता है, ours possessive pronoun. So because R is the adjective and the other three are your pronouns, therefore R is the odd one out. Now students, I'm sure you must be knowing what are subject pronoun, object pronoun, possessive adjectives and possessive pronouns. Subject pronouns, they are nouns performing the main action in the sentence. Like I, you, he, she, they, who. Object pronoun is used as the object of the verb or a preposition and usually appears after the verb or the preposition. Possessive pronoun replaces nouns. Possessive adjectives, it is used to express possession or ownership. When what owns something, then they go before the nouns to modify them. Next is pretty, prettier, prettiest, and prettily. You have understood in degrees of comparison of adjectives. Pretty is your base form of the verb. Prettier is comparative, जहाँ पे एडजेक्टिव के पॉजिटिव के बाद लगता है er वो कंपैरेटिव हो जाता है est वो हो जाता है सुपरलेटिव so because these three are the degrees of comparison and prettily is an adverb prettily is the odd one out. Next, happy, happier, happiest, happily. Same as above. These are the degrees of comparison. Happy, happier, happiest, and happily is the adverb. So happily is the odd one out. Number 7. Fill in the blanks with is, am, are, was, were, has, have और had. इनमें से ये fill-ups में क्या आएगा? With explanation, you have to do it. Number 1. He dash an intense chest pain yesterday. कौन सा ऑप्शन होगा? पहले आप try to understand. Yesterday means past, so यहाँ पे होगा had. He had an intense chest pain yesterday. Number 2, he dash not feeling well, so we took him to a doctor. He was not feeling well, so we took him to a doctor. Was क्यों? Because was जो है वो आपका is का past tense है and it is used in first person singular I and in third person singular he. अब यहाँ पे he was not feeling well, so we took him to a doctor. That means ये जो ही है आपका थर्ड पर्सन है सिंगुलर पर्सन है इसीलिए हम यहाँ पे क्योंकि ये पास्ट टेंस है was not feeling well therefore it is was. 3 I dash an iPod I keep it carefully. अब यहाँ पे मेरे पास कुछ है I am possessing something therefore I have. Now have indicates your possession which is used with pronouns like I, you, we and they. Number 4. I dash waiting for you at the entrance of the hall come first. Now students इस sentence में आप क्या कैसे जानेंगे क्या use करना है ing means continuous so it will be I am waiting for you at the entrance of the hall come first because am is used for first person singular it is showing the present state of being अभी मैं तुम्हारे लिए wait कर रहा हूँ तुम जल्दी आओ I am waiting for you at the entrance of the hall come first. So we use am for first person singular and जो अभी हो रहा है present में हो रहा है. Number 5. There dash more than 50 people waiting to meet the prime minister but the minister did not come. There are this is plural nouns. 50 people जो है आपका singular नहीं है आपका plural है. So यहाँ पे आएगा आपका there are more than 50 people waiting to meet the minister but the minister did not come. Number 6. He
dash some passes for the show, I will go with him. Now यहाँ पे होगा he has some passes for the show, I will go with him. उसके पास कुछ passes है शो के लिए, मैं उसके साथ जाऊंगा. So it is used with singular object he. Dancing dash a very good form of exercise. Exercise is dash good for health. Now वर्ब जो dancing है ये आपका present tense में है. So it will be dancing is a very good form of exercise. Exercises are good for health. अब exercises जो हो गया आपका plural हो गया. जहां पर भी plural आएगा verb में वहां पे आप यूज करेंगे subject में आप वहां पे यूज करेंगे are. Exercises are, dancing is. Exercise is plural, dancing is singular. Number 8. India dash friendly relations with most of the neighboring countries. India has friendly relations. Singular subject India के बारे में हम बात कर रहे हैं. So it will be India has friendly relations with most of the neighboring countries. I hope this is clear to you students. Number 8. Circle the correct option. Now, a pack or a troop of wolves attack the deer. A पैक ऑफ वुल्स जो है आपका कलेक्टिव नाउन. जब एक से ज्यादा वुल्स तो हम वुल्स इज अ नाउन एंड इफ pack of wolves is a collective noun. The word pack is used to call a number of wolves together is a collective noun for it is pack of wolves. Number 2. I catch or I caught the last person went home. I caught. लास्ट बस मैंने पकड़ा एंड वेंट होम. आई हैव ऑलरेडी गॉन होम. सो ये पास्ट टेंस में कॉट हो जाता है. कैच का जो पास्ट टेंस है वो कॉट है. सो आई कॉट द लास्ट बस एंड वेंट होम. Number 3. Mount Everest is the higher or highest mountain peak in the world. Mount Everest is the highest mountain peak in the world. क्यों highest? Because Mount Everest हम कंपेयर कर रहे वर्ल्ड के बाकी सभी पीक्स के साथ. सो ये कंपैरिजन एक और सिर्फ दोनों के बीच में नहीं है. अगर दोनों के माउंट एवरेस्ट इज हायर देन माउंट कंचनजंगा तब हम हायर लगाते हैं. दो चीजों में हो रहा है सिर्फ माउंट एवरेस्ट एंड माउंट कंचनजंगा. लेकिन यहाँ पे माउंट एवरेस्ट को कंपेयर कर रहे हैं बाकी बहुत सारे पीक्स वर्ल्ड के. सो वी यूज द सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट. नंबर 4. प्लीज ओपन the or a window. Please open the window. I am telling you, please open the specific window. Therefore, we use the definite article the. Number 5. The weather is awful today or yesterday. The weather is आ गया तो यहाँ पे the weather is awful today. The weather was awful होता तो past tense में क्या होता है? Yesterday. The weather was awful yesterday, but the weather is awful today. Present tense में. Number 6. He was sure that yeah, until he would be selected in the team. He was sure that क्योंकि that जो है clauses में add करता है आपके verb के object की तरह. Therefore we use that. Number 7. It is 5 by or in my watch. अब pay attention. This is a very very important concept. Preposition जो by है वो उसका meaning है according to. So according to my watch it is 5. It is 5 by my watch. Now why don't we use in? Because time जो है it is an abstract concept. It does not have any body. Therefore saying in your watch is wrong. Time जो है आपका abstract concept है. Nothing concrete about time. Next, number 8. I don't agree with you or over you. I don't agree with you. क्योंकि I am talking to you, so we use the preposition with as it indicates connection. जो with होता है preposition वो हम तभी use करते हैं जहां पे एक connection होता है between two people or things or more than two people or things. Therefore, I don't agree with. Next. Change the tense as directed and rewrite the sentences. My dentist checks my teeth and gums. Simple past tense. My dentist checked. Checks का जो है past tense में checked हो जाता है. So my dentist checked my teeth and gums. Number 2. I am reading my emails. अब जो ये है past continuous tense में हमको बनाना है. I am reading my emails. Past, I was reading my emails. Number 3.
he will send your books, इसका he will send your books ये जो है सेंटेंस ये फ्यूचर के लिए हम बात कर रहे हैं, बट ये the question is write it in simple present tense. He sends your books. So number 3 becomes he sends your books in simple present tense. Number 4, Sam woke up early in the morning. इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पे लिखेंगे. सैम woke up early मतलब वो ऑलरेडी उठ चुका है, सो ये पास्ट में है, बट हमको प्रेजेंट में लिखना है. सो सैम wakes up early in the morning is your simple present tense. Number 5, she discusses her problems with the teacher. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करना है. जहां पर भी कंटिन्यूअस है वहां पर हम ऐड करेंगे वर्ब को ing के साथ. सो शी प्रेजेंट है, is discussing her problems with the teacher. जहां पे भी प्रेजेंट है she is हो जाएगा, एंड कंटिन्यूअस है तो डिस्कस हो जाएगा discussing. she is discussing. अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलता तो she was discussing her problems with the teacher, but because it is present she is discussing. Number 6, he wastes his time, simple future tense. He will waste his time. फ्यूचर में ये वो टाइम वेस्ट करेगा, सो ही विल वेस्ट हिज टाइम. नंबर 7, they were looking for a new house in a colony. Present continuous tense. They were looking. So वर्ब जो है ये हमारा पास्ट है, हमको इसको प्रेजेंट में लिखना है. सो दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू हाउस इन अ कॉलोनी. नंबर 8, I treat the people politely. Simple future tense. This is very important. I will treat people politely. अब यहाँ पे जो है I treat the people politely ये हो जाएगा I will treat future tense में. It will not be I will treat the people politely. The नहीं आएगा, कोई article नहीं आएगा. क्यों? Because no article will be used for plural nouns that refer to general people or things. यहाँ पे people general term में हम use करते हैं. Therefore there will be no definite article. The जो है हमारा definite article है used for some definite or specific person or people or thing. But यहाँ पे हम generally बात कर रहे हैं. Therefore there will be no article here. Next. 10. Do you care for the environment? Answer these questions using these adverbs only, always, never, sometimes, often, rarely. Now, हमें ये जो adverbs दिए गए हैं इन adverbs को इन blanks में भरना है. Do you turn the tap off when soaping or scrubbing dishes? Always. अगर आप हमेशा करते हैं तो always लिखेंगे, अगर आप कभी कभी करते हैं तो often लिखेंगे, अगर आप कभी नहीं करते हैं तो never लिखेंगे. So depending on that, please do this on your own. I have given the answers here. You can refer to it. Now, number 11. Fill in the blanks with past form of bracketed verbs and complete the story. यहाँ पे students, there is a story which has been given about a king and it has been asked to change the past form of the bracketed verbs. ये जो bracket में जो verbs है like be, come, show and all, you have to change it to the past form. Solomon the king. Solomon be a king. Solomon was a king. Past form of be is was a king. Solomon was a king known for his intelligence. One day, the queen of Sheba come to test his wisdom. Come जो है present है, तो past में है came. She showed him 2 flower pots. Past में show का हो जाएगा showed. SHOWED. Past में हम हमेशा ed ऐड करते हैं. Which look alike. Which looked alike. LOOKED. ed ऐड करेंगे. The flowers of one pot was real. Be का past form है was. The flowers of other pot was artificial. Be का फिर से was हो जाएगा past में. She asked का हो जाएगा asked the king to find out the real flowers without touching them. King Solomon look का हो जाएगा looked past form में at the flowers and then opened the window. Open का हो जाएगा opened. Soon some butterflies and honeybees fly in. Fly का हो जाएगा flew in. FLEW and sit का हो जाएगा sat on the real flowers. Then Solomon tell the answer to the queen. Tell का past form में told the answer to the queen. She past form of be है was.
impressed with the wisdom of the king, so. So we have changed all the bracketed verbs to their past form and written the passage again. With this, we come to the end of your Let's Revise Students, chapter 1 of your Superb English Grammar book. If you have any doubts, please let me know in the comment section. I will definitely help you. Please go through the whole exercise again very carefully and try to refresh your memories about each and every concept. I have tried to explain it with proper explanation and solutions and reasoning. If in grammar you cannot give a reason for your answer, then it is very of no use actually. So, if you like my channel, students, please like, share, and subscribe. And your notification button here, please keep it on so that when I post a new video, you are notified about it. I hope you like my video, students. Kindly subscribe and share. Thank you.